हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आज है आपकी सीरीज नवरात्रि वाली, जिसमें नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों के साथ। आज हमारे साथ है डॉक्टर सौम्या रघुवीर। शी इज द प्रिंसिपल ऑफ वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल। आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सो हेलो सौम्या मैम। Hello, Prakhar. Thank you for having me. Thank you so much for being here, ma'am. Thank you so much for giving your precious time. It's so nostalgic to have you around here. It's my privilege completely. Thank you so much for being here. So मैम, मैं जानना चाहूँगा आपकी कहानी क्या है। इट्स लाइक आपके स्कूल डेज, आपके कॉलेज लाइफ, आपका जर्नी कैसा रहा है। सो विल स्टार्ट विद द स्कूल लाइफ कि आपके जैसे स्कूल्स काफ़ी चेंज हुए हैं। सो हाउ इज़ इट लाइक, कैसे इम्पैक्टफुल रहा वो आपकी लाइफ के लिए? तब उतना रियलाइज नहीं हुआ। अभी आप पूछ रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ, काफ़ी चेंजेस आए हैं। बट इट हैज़ बीन अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी, be it childhood, be it my college days. तब हम जॉइंट फैमिली में हुआ करते थे. My father was working with State Bank and he had a transferable job. So I was born and brought up in Jabalpur. So I started my education there with Christchurch Convent School. And my school was very well equipped with all facilities at that time. Being a convent school, there was a strict discipline. Nuns का स्कूल था और वो नाखून नहीं बढ़ा सकते, आपको 2 चोटी तेल लगा के करना है, यू हैव टू हैव अ रेड रिबन और ऐसा प्लेट्स डाल के। तो आई मीन दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ लाइफ और बहुत प्यारी जर्नी रही। वी हैड अ वेरी गुड म्यूज़िक फैकल्टी, डांस फैकल्टी। आई लर्नड द म्यूज़िक, द डांस, played all kind of sports in school. So the school has given that foundation, you know. So I mean, that led me to showcase my talent as a singer, as a dancer, as a sports person in different fields in college days. And I also represented my school, my college at national levels. Oh, wow. And thereafter, at international level recently, in 2010, I was a cultural ambassador of India to Brazil, Paraguay, and Bolivia. Wow. I got to perform after so many years. So, yes, school had laid that foundation. Okay. School is very important. Very, very important. Very important. Okay. And how about like जैसे आपने बोला कि आपने सिंगिंग मतलब कोकुलर एक्टिविटीज में आप हमेशा से इन्वॉल्व रहे, सो हाउ कम लाइक एजुकेशन एंड कोकुलर को आपने बैलेंस आउट किया? वो टाइम टेबल में अगर आप प्रॉपरली फिक्स करके रखते हैं, और तब ज़माना ऐसा था कि टेलीविज़न नहीं था। ओह, डिस्टर्बेंस नहीं थी, डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। देयर वाज नो टेलीविज़न, रेडियो वाज द ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। वो भी कम, मतलब स्कूल से घर, घर से स्कूल, और जो थोड़ी बहुत तालीम थी वो स्कूल में ही मिल गई। सो आई थिंक टाइम बहुत हुआ करता था फॉर एवरीथिंग टू परस्यू। That really mattered. Very nice. So you have earned like MSc in microbiology, then MA, and like you are a gold medal in it, then a doctorate in education, like so many degrees. So like you have been that studious person from long? I was an average, I would say. Oh my God, this was average. Okay. In school time, I was average because I was into so many things. I was into music, I was into dance. So academics used to take a little back seat then. But I really became conscious about getting good marks when I came to class 11th. And then though I used to balance my music, dance, everything with academics, then I started managing my time. So मुझे क्योंकि पैशन था, तो इसलिए मैं समय, जब आपको पैशन होता है तो आप समय निकाल ही लेते हैं। Correct. तो इसलिए I started, you know, doing everything and balancing everything. So what made you triggered in 11th कि आपको अब पढ़ना चाहिए and you should have good marks? Right. So I had a lot of my good friends who were good at academics, and teachers also start, you know, appreciating who used to get good marks and all. So I also wanted to be cynosure of all eyes
You among wanted teachers. the spotlight. Yes. You like the spotlight. Not eh? really, but I also wanted to be, appreciated for my Achievements. achievements in academics. Academics. So it's like I started working hard. Okay, And okay. that is how. Okay. Yes. Okay. And how why did you pursue this line of academics? Like, did you had a plan or it was the flow? I had few plans, of course. I wanted to become a scientist. Oh, okay. And that is why I chose science as my subject. Okay. Okay. And I went to college. I did well in college. I pursued my MSc degree, and I was chosen as to become a junior scientist by one of the senior scientists from Bhopal. Okay. And but somehow it did not click, Okay. and I could not pursue that. Okay. So like you didn't found the interest or there was some issues there? As I told you, I was brought up in a joint family. Okay. So there were a lot of, hiccups. Okay. And Okay. कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली से ऐसा उस वक्त ऐसा लगता है कि लड़की को अकेले कैसे भेजेंगे. तो वो बात थी. उस जमाने में थोड़ा डिफिकल्ट और हुआ करता था. हाँ, काफ़ी डिफिकल्ट हुआ करता था और हम में भी उतना करेज नहीं था कि अकेले बाहर निकल के जाकर कुछ ऐसा and it was change of states as well. Change of states as well. Yes. Okay. So like you started your career in teaching like for 1994. Yes. So it's like right now 30 years. Yes. Wow, yes, that's really big. So congratulations for that. Thank you. Okay, so like how has your teaching journey have been? What made you passionate about it? I'm a teacher by choice. Okay. And it has been a very, very rewarding journey. Okay. And when you see your student interviewing you, what else, Yeah, I get it. It has been very, very meaningful, very rewarding. जो भी हासिल हुआ है, मैं अगर अपने हॉबीज़ को सेटिस्फाई कर सकी हूँ टीचिंग की वजह से. बच्चे मेरा पैशन है, तो बच्चों से बहुत प्यार है, तो मुझे ऐसा लगता है उनको देखकर एक अलग एनर्जी मिलती है. Correct. तो वो उस एनर्जी को पाने के लिए भी एक मैं कह सकती हूँ कि टीचिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है. And I'm very proud to be a teacher. Wow, beautiful. I still remember in my school days, you used to call me Betu. So you used to call people like इतने cutely आप बोलते थे, ऐसा लगता था yes, you are like proper ऐसे godmother वाली feeling आती थी. It's really nice. So how have you been like achievements आपके कैसे रहे आपकी school journey? Because 30 years is a lot in teaching field. Yeah. So like क्या थी वो journey आपकी teaching में? कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि जैसे आपको मैंने बताया कि मैंने डांस कथक की शिक्षा ली, तो मुझे कई स्कूल्स में एज कोरियोग्राफी के लिए बुलाया जाता था. Wow. डांस सिखाने के लिए, जबकि मैं MSc परस्यू कर रही थी. बिकॉज समबडी आइडेंटिफाइड मी सीइंग मी डांसिंग इन माय कॉलेज ऑडिटोरियम, and they asked me if you can choreograph. The medical students came to me and they asked me कि आप हमारे लिए एक डांस कोरियोग्राफ कर सकते हैं. I said why not. तो मैंने कोरियोग्राफ किया. तो वहाँ जो एक जज बैठी थी वो एक स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी. Okay. तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि क्या आप टीचिंग जॉब लेना पसंद करेंगी. Wow. तो आई वॉज लाइक टीचिंग, एंड देन आई थॉट कि मुझे तो साइंटिस्ट बनना था. तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए. यस, जब ऐसे अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आई हैव नेवर सेड नो टू एनीथिंग. तो आई जस्ट टुक and I started finding my core into teaching. Okay. तो वो choreographer से I became a teacher. Wow. And they saw कि मेरा science background है, so they offered me EVS. So I started with a primary school, and then gradually ladders चढ़ती गई, and then became a lecturer. Okay. तब TGT PGT नहीं होता था. So it was जो 11th 12th पढ़ा था तो उनको lecturer कहते थे. तो I was a lecturer in the school. Okay. So वो डांस से मैं जो है, मतलब वो दरवाजे जो आपने खोले, इट टुक लाइक वो 30 इयर्स अभी पीछे डाउन द लाइन में है. जी बिल्कुल. वेरी नाइस. मतलब इट इज सपोज्ड टू बी सेड कि नेवर से नो टू एनी अपॉर्चुनिटी. बिल्कुल नहीं कहना चाहिए आपको. हो सकता है कि वो और दरवाजे आपके लिए खोल दे. Definitely. Okay, so it's like right now you have a son. Okay, and he's successful in his career, and he's graduated in BTech right now. Right. So like how do you feel about it? My son, he is Siddhant.
जैसा नाम है वैसा ही उसका पर्सोना है यस बहुत सिद्धांतवादी है, इज़ वेरी डिसिप्लिन. He's been going with me to the school when he was 3 year old, coming back with me. स्कूल की जॉब डिमांडिंग होती है अगर आप बहुत ही डेडिकेटेड हों उसके प्रति. सुबह 6:30 बजे हम निकलते थे और लौटने का वक्त नहीं होता था. एंड Oh my God. वो छोटा सा बच्चा, ही वॉज सो अडेप्टेबल, सो फ्लेक्सिबल. और उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे इतनी देर तक क्यों रोका जा रहा है. जो खिलाया वो खा लिया. Okay. हाँ, जहाँ सुला दिया वहाँ सो गया. स्कूल में ही उसकी ज़्यादातर ज़िंदगी निकली है. एंड आई वॉज ऑलवेज कि छुट्टी नहीं लेना है. तो इवन ऑन हिज PL days ही वुड नो गो अलॉन्ग विथ मी. मेरे ख्याल से हर टीचर की कहानी होगी. Okay. And he's also a recipient of 100% attendance for Wow. 7 consecutive years. Oh my God. Yes. Oh my God. 7 years. That's big. So, I mean, he's been a very, very good son, and Okay. He has supported me a lot in whatever I have achieved today. Beautiful, beautiful. And like, what is that one piece of advice that you gave him during his BTech journey that made him a graduate in BTech, and right now he's pursuing for post graduation as well? You actually have to become a right role model. Okay. आपको वर्बल एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को. चिल्ड्रन ऑब्जर्व यू, Beautiful. यू नो. Beautiful. तो आपको हमेशा देखना है कि आप सही कर रहे हैं. आप सही तरीके से अगर आप अपना कॉन्डक्ट सही रखते हैं, आप ऑनेस्ट होते हैं, आप हम्बल होते हैं, पोलाइट होते हैं, लोगों से बात करने का तरीका बच्चा देखता है, तो बच्चा अपने आप ही उस तरीके से शेप अप होता है. Correct. तो मुझे लगता है कि एडवाइस आपको वर्बली देने की ज़रूरत नहीं. आप ऐसा करिए, ऐसा ना करिए. तो हो सकता है कि चिल्ड्रन वुड रिटालिएट एंड वुड नॉट नो. हाँ ठीक है, आफ्टर सर्टन एज आप एडवाइस नहीं दे सकते. यू हैव टू रोल मॉडल. Correct. जी. That's a beautiful mindset, I'll say, because that is much needed nowadays. Because the moment you are staying, मतलब आप advice दे रहे हो या आप उनको बता रहे हो कैसे करना है, they retaliate actually. yeah. वो होता है, वो आज की generation में होता है. Okay. So how have you been like from a journey of a teacher to becoming a principal right now? So it's like that journey. What are the things that you learned from it? Yeah, it's again a very beautiful journey. I was always desirous to own a leadership position because I had a lot of ideas and I wanted to execute it. When you are a teacher, you are a leader in yourself. So जितने भी मेरे mentors रहे हैं as a principal, जिनके अंडर में मैंने काम किया है, वो बहुत अच्छे लीडर्स रहे. They were very, very democratic leaders. और आज मैं जो भी हूँ, they have shaped me, they have groomed me. Beautiful. मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको I extend my heartfelt gratitude to them. Beautiful. हर पिच जो है वो नया होता है, आपको अलग तरीके से बैटिंग करनी होती है. Correct. है ना. तो इसलिए जर्नी हमेशा आपके ऊपर है कि आप डेस्टिनेशन को किस तरीके से देखते हैं, आप रास्ते को किस तरीके से देखते हैं. तो वो तो आपको ही बनाना होता है. तो खूबसूरती अगर आपके हाथ में है, आपके आँखों में है, तो वो खूबसूरत दिखाई देगी. और उसके लिए आप अपनी मंजिल को पाने के लिए आप उस तरीके से आप रास्ता बनाते हुए चलेंगे. Okay. So ma'am, what is that one piece of advice to those teachers जो inspire करते हैं, aspire करते हैं to become something very big in their life? And since you have been that a part of journey, so वो क्या advice आप देना चाहेंगे उसमें? Like sometimes no, you have to destroy yourself to rebuild something greater. Okay. The process of breaking down is not a failure. Wow. You know, and but it is very necessary part of growth. जब बीज जो है वो जब फूटता है, Correct. तभी तो उसमें से एक पौधा उठता है. क्या बात है. Isn't it? Correct. So you have to be very, very confident of yourself, and you have to become an indispensable wherever you work. Yeah. आप अपना 100% दीजिए, बहुत डेडिकेटेड रहिए, एक बिलोंगिंगनेस के साथ काम करिए, तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा. क्योंकि वो एक ग्रूमिंग, एक आपको शेप देता हुआ चलता है. किसी चीज़ को ना मत करिए, पहले आप समझिए कि आप कर सकते हैं,
और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप आके बैठ के बात करिए कि मुझे ये हिच है, और अगर आपका लीडर है तो हो सकता है कि इसको थोड़ा कट करना, हाँ जी, हाँ, तो हो सकता है कि आपके लीडर आपको प्रॉपरली एडवाइस करें, सजेस्ट करें, और आपको ये बताएं कि आपको किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप किसी भी चैलेंज को लेने के पहले उसको मना मत करिए, चैलेंज को लीजिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। find solution after that. yes Okay. yes Beautiful. Since ma'am, you have been a person who's used to like multiple tasks every time because इतने सारे hobbies, इतने सारे activities, then teaching as well, then being a mom as well. So it's a very tough challenge at the same time. So how you used to balance your personal life and professional life at the same time? Yeah. So see, your biological clock and your career clock, they're always in a conflict. Oh, correct. Huh? Correct. So you have to find a balance. And the most important key is your family support. अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो कोई भी चैलेंज हो आप आसानी से उसे तय कर सकते हैं. And I've been a very very fortunate in that context. I had a very supportive in-laws and very very doting husband. Beautiful. So अगर मैं भी कहीं अपने आप को पीछे खींचती थी तो ही यूज्ड टू स्टैंड, अरे कर सकते हो, अरे कुछ भी नहीं है. Wow. तो ही ऑलवेज पुश्ड मी टू नो मूव फॉरवर्ड. Okay. सो इट इज़ नॉट माई जर्नी अलोन, इट इज़ हिज टू. Journey. Okay. Yeah. Okay. So it's been a very very beautiful journey, rewarding journey, as I've said already. So what was your question? So how do you balance your personal life and professional work-life balance. Yes. Work-life balance has to have a proper time management. Okay. Yeah. It is very challenging. बोलना आसान है, लेकिन अगर आप अपने 24 आवर्स में आप अगर समय को बांट लें अच्छे से कि अब मुझे ये करना है, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर चेक लिस्ट एवरी डे. एवरी डे इज़ अ न्यू डे. सो उसको आप एक चैलेंज की तरह आप उसको एक चेक लिस्ट बनाइए और आप नोट करते जाइए कि मुझे इस समय से इस समय ये करना है, इस समय ये मेरा टीचिंग पीरियड है, इसके बाद मुझे कॉपी करेक्शन करना है, इसके बाद मुझे अपने बच्चे का होमवर्क कराना है, इसके बाद मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू टेक हिम फॉर ट्यूशन. सो अगर आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर से रखते हैं तो आई like a proper timetable kind of stuff. you have to have a timetable. Okay. Yes. Beautiful. अब जैसे आपने अभी अपने हस्बैंड के बारे में बताया, so it's like जैसे बोला जाता है that every successful man has a female behind it, a woman behind it. Yeah. So can we say Yes. other ways around right now? Of course, yes. So right now for a successful woman, Yes. there is the man behind him. Yes. Beautiful. Yes. Beautiful. Of course, Okay. yes. Okay. So what was that one challenging moment of your career where it was very difficult for you to understand how to achieve this? Like very, very challenging. Right. So when I started my teaching career, Siddhant was not there in the family. So it was only us, me and my husband. So I was like a free bird to do everything. But when Siddhant came in life, yes. So there was a purpose in life. No, child is your core for your existence. So when he was growing, to find a balance, it was very very challenging. I had in-laws. I have always been in a joint family. So I wanted, to be part of everything. Correct. I wanted to manage the home also well. I wanted to cater to my child as well. I wanted to be a good wife as well. And I wanted to be a good professional as well. Yeah. So again, time management was the key. Okay. But having said that, कितना भी टाइम टेबल बनाओ, अचानक सडन यू विल गेट समथिंग, नो, अ न्यू असाइनमेंट. Correct. एंड you have to stretch beyond the clock. Correct. Yes. So it is challenging, but अगर उस चैलेंज को आप पार कर लेते हैं, so nothing like it. When you look beyond,
वो आपको एक सुखद एहसास देता है. क्या बात, मतलब the memories, the beautiful memory that you Yes, cherish right now. yes, Very nice, yes. very nice. Okay, so that it's like generally मैम जहाँ पे पूरी दुनिया सिर्फ लेने के पीछे पड़ी है, टीचर्स आर द पीपल जो देने के पीछे लगे हुए हैं, बिकॉज दे हैव बीन नर्चरिंग पीपल. Right. सो इतना गिवर्स माइंडसेट आता कहाँ से, मतलब हाउ डू यू गेट मोटिवेटेड बाय स्टफ लाइक दिस, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट, इट टेक्स अ लॉट. ये आप जैसे बच्चे हैं. You know, children are the most selfless being. Okay. The kind of unconditional love that you get from children is priceless. Okay. It's the most precious thing in this world. And I have experienced it, still experiencing it. Wow. तो जब आप बच्चों से आपको जब वो प्यार मिलता है ना अथाह, तो आपको आप खुद ब खुद मतलब उनके लिए जी जान लगा करना. आई मीन यू वांट टू गो बियॉन्ड Okay. एंड डू समथिंग एंड that's the, I mean, it's a minuscule, but you are somewhere contributing to the society that way. Correct. In nurturing a child, shaping the child Yeah. into a right human being. Yeah. Okay. So ma'am, what is that piece of advice to those students जो कहीं ना कहीं अभी भटक जा रहे हैं and they don't value the teachership, because it takes a lot to a teacher to bring everything in the plate and nurture that child. But because they are a child, they are a small kid, or yeah, let's say a teenager right now, but they are not able to value that much. So what is that advice to them? बच्चा पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज. भटका है तो क्यों भटका है? वो बचपन से तो नहीं भटका है. एवरीबडी नो कम्स इन दिस वर्ल्ड इन द सिमिलर मैनर. Correct. Now upbringing, the family background matters. So very a small piece of advice for the parents who are watching this video. बच्चा जब आता है तो इट्स अ गॉड गिफ्ट. आपको एक ध्येय देता है, आपको एक गोल देता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. और एक बच्चे को शेप एक अच्छे व्यक्तित्व में बदलने का जो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमाइटी ने दिया है, उससे बड़ा कोई और क्या कहना चाहिए तोहफा आपके हाथ में नहीं. आई मीन यू शुड टेक इट एज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट. और कोशिश करना चाहिए कि उसको लाड़ प्यार से नहीं, उसको सही वैल्यूज़ के साथ उसको Okay. कैसे नर्चर करें. Okay. गलत है तो गलत है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही सही. है. तो आपको इसलिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा. Okay. स्कूल अपना रोल प्ले करता है. स्कूल के साथ भी आपको सामंजस्य बना के रखना चाहिए. यू शुड बी इन रेगुलर टच विद द स्कूल, The class teacher, the teachers, yeah. या द फैकल्टी. और अपने बच्चे की कमियाँ खूबी सब बताते चले तो स्कूल भी उस हिसाब से उस पर काम करता है. Correct. तो बच्चा कैसे भटकेगा? कहीं ना कहीं कोई लूप होल मिला होगा, या तो परवरिश में कहीं कोई कमी रही होगी, तब तो बच्चे को हम दोष नहीं दे सकते. Okay. अगर वो भटक भी गया है तो अब हमको ये देखना है कि वापस हमको लेके किस आना है. तरीके से उस बच्चे को मोल्ड करें. Okay. चिल्ड्रन आर लाइक नो क्ले, वेट Okay. क्ले. आप Yeah. जैसा मोल्ड करेंगे वो हो जाएंगे. Okay. तो इट इज़ इन आवर हैंड्स, यू नो. Okay. तो वो कोशिश हमें करनी चाहिए. That's really nice. मतलब it's not about the person, it's about the surrounding they are into. करेक्ट. It matters a lot. It really matters. Okay. Beautiful. Does matter. So ma'am, it's like it's been always your aspiration to be a principal, and right now you are the principal of Yeah. Venkateshwar Signature School. So Right. how does it feel for you now? It's a very beautiful feeling again, to lead an institution of great repute. As I said earlier, sometimes you have to destroy yourself to rebuild something greater. The process of breaking down is not a failure, but a necessary part of growth. It was difficult for me to move forward from the earlier institution. But only by shedding your old self can you rise stronger, more resilient, and more powerful than before. So I thought of embracing the discomfort and trust the journey. And it has led to a beautiful transformation in myself. So I trusted the process. Wow. I'm enjoying being the leader because I'm able to
execute a lot of innovative ideas that I had, and able to nourish children the way I think it should have been. So I'm really, really happy Okay. about it. So the say is right. With the great power comes great responsibilities. Yes, it does. It does. Yes. Okay. And what's the plan of yours to take the school ahead? Yes. So, future aspirations for myself and my team at VSS, we provide a very nourishing environment that enriches the lives of our students with knowledge, happiness, and the character building activities, and to nurture responsible young leaders equipped with intellectual skills, social abilities, and strong values. So, my twin focus is on cultivating character and competence. Beautiful. Beautifully framed. Very nice. Okay. So, ma'am, what is that one piece of advice for the young women or the females or people who are around outside and they are not able to balance their personal and professional life? At the same time, they are pretty ambitious for things, but they're not able to take the responsibility of it. Right. Yeah. That's a very good question, Prakhar. So, there are 5 lessons that I've learned in my journey. One is make yourself indispensable based on your competence. Be prepared to power through difficulties. Create coping mechanisms. It's very, very important to have a work-life balance again. Correct. Be thankful for your upbringing. Be grateful. Gratitude should be one important element in your life. You should be very, very grateful for your existence. Communicate with confidence. If you have established a niche, there's no room that anybody can replace you. Replace होते भी हैं तो it will be difficult कि आपके जैसे क्वालिटी का काम मिले. Correct. तो इसलिए अपने आप को उतना सक्षम बनाइए. Managing your time and energy to meet both professional and personal commitments while prioritizing self-care and well-being. अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए. एंगेज इन अ हॉबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको म्यूज़िक का पैशन है, आपको डांस का पैशन है, आप किसी स्पोर्ट में अच्छे हैं या आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आप बहुत अच्छी कविता लिखती हैं, करिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एंगेज इन अ हॉबी. मैं अभी भी आई डू लॉट ऑफ डांसिंग, लॉट ऑफ सिंगिंग. Wow. You know, I go for my yoga class. I make out time for the gym. So it is very important to engage in a regular physical activity. It could be a dance, it could be yoga, it could be Zumba, whatever. ज़रूरी है. Zaruri. आप फिट रहेंगे तब तो फैमिली फिट रहेगी. Correct. आपको देख के आपका बच्चा he will also try to exercise. Yeah. Isn't it? So as I always tell, you have to role model. Learn to let go. किसी चीज़ को अंदर रख के परेशान मत होइए. Don't take stress. होता है, कहना आसान है. Correct. है ना? Correct. पर स्ट्रेस मैनेजमेंट भी ज़रूरी हमको है. सीखना ज़रूरी है. और वो करते करते ही आता है. यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू योर हैबिट. अडैप्ट एंड एडजस्ट योर स्केड्यूल. अपने लिए टाइम निकालिए, बहुत ज़रूरी है. और जिस चीज़ के लिए आपका मन है वो ज़रूर करिए. Okay. ज़रूर. जिंदगी तो एक ही बार ही मिलती है ना? Correct. जिंदगी ना मिले दोबारा. तो इसलिए उसको आपको खूबसूरत बनाना आपके हाथ में है. Yes, beautifully said, ma'am. Thank you so much for being here, ma'am. ये lessons ना वो actually वो school वाला touch दे रहा है जहाँ पे ना it's not about just the subject, it's about the life, it's about the life lessons. It's really निदा nice. फाजली ने बहुत खूबसूरत शेर कहा है. Beautiful. हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा. क्या बात है. तो इस तरीके से आपको रहना है. आपको अपना रास्ता बनाते हुए चलना है. Beautifully, very beautifully said, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for being here. Thank you for and having me, Prakhar. Thank you for giving me so much amount of time and your values. Thank you. Thank you so much. Thank you. Signing off, Prakhar Agrawal and Dr. Sowmya Raghubir.